Hey guys, welcome back to my channel. If you're new to my channel, hi, my name is Mandira. I do create videos about lifestyle, beauty, makeup and sometimes vlog. And if that is your sort of things, then please keep on watching. So today's video is going to be a H&M haul video. If you have watched my previous video, you would already know that I recently visited H&M store in Malad. What I got from there, I am going to share it with you guys here. So without further delay, let's get into the video. I have already started using couple of stuff. So the first thing is this wallet. ये जो black color का wallet मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, ऐसा compact one. Because right now the wallet I am using, it's in blue in color. That was also compact, but वो थोड़ा सा stitches वगैरह खुलने लगा है because you know कोई branded नहीं है, कुछ 200-300 रुपए का मेरा कुछ ऐसा wallet है. This one was fine because वो वाला भी खराब होने लगा है, तो I really wanted a compact, good quality वॉलेट. जो बैग मैं कैरी करती हूँ उसमें ज्यादा स्पेस भी ना ले और छोटा ऐसे कॉम्पैक्ट भी हो, कैरी करने के लिए इजी हो एंड थोड़ा बहुत सामान आ जाए. तो आई हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड एवरीथिंग फ्रॉम माई ओल्ड वॉलेट टू दिस वन. सो दीज आर द प्लेसेस टू keep your cards and everything. One more sort of secret compartment sort of things, you can keep any ID or anything. I have kept my office ID. This is a coin compartment, you can keep your coin or anything, and this is where you keep your notes and bills and everything. And yeah, that is why I like this wallet, because first thing, it's black in color. I really like that texture. It's very premium quality and luxe feel देता है इस पे. एंड ये जो टेक्सचर्ड वाला है ना, वो मुझे ये प्रिंट एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, ये जो स्टाइलिंग. एंड वन मोर एडिशनल थिंग इज दिस काइंड ऑफ जिप. आई लव दिस काइंड ऑफ जिप इन गोल्डन और सिल्वर एनीथिंग. जो दूसरा नॉर्मल वाला जिप आता है वो मुझे खास कुछ पसंद नहीं है, मुझे ऐसे जिप बहुत पसंद है. तो ये जैसे ही मैंने देखा, आई हैड टू पिक दिस. तो दिस वन हैज कॉस्टेड मी $14.99. देयर वाज नो डिस्काउंट. आई हैव पिक्ड ओनली 1 or 2 स्टफ ऑन डिस्काउंट. तो या, दिस इज द फर्स्ट परचेज. सेकेंड वन इज दिस रिंग्स. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग इट. सो ये एक सेट ऑफ रिंग्स है जिसमें 5 रिंग्स आता है आपको. This 1 2 3 4 5. So the basic idea is to get these rings because मैंने पहले कभी H&M का एक्सेसरीज नहीं पहना है. H&M बोलो, Zara का बोलो, क्योंकि मुझे लगता है कि yes, definitely they give you good quality, premium quality, but after a certain period of time ये सारे golden color खराब हो जाते हैं. Like 1 month 2 month if you are wearing regularly, after 1-2 months it will start fading. ये tarnish free भी नहीं है कि मुझे काफी दिनों तक चलेगा. आई फील लाइक H&M का एक्सेसरीज और Zara का एक्सेसरीज बोलो, कोई भी बिग ब्रांड का जो एक्सेसरीज हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरियस ब्रांड. सो 699, 799, 899 देके, आई डोंट थिंक ओनली फॉर 3 months इफ आई वेयर इट. आई अंडरस्टैंड लाइक 5 रिंग्स दिया हुआ है इसमें, किसी किसी में 6 रिंग्स भी आता है, बट मुझे फिर भी मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है क्योंकि एक्सेसरीज में मैं उतना खर्चा करने से पहले बहुत ज्यादा सोचती हूँ, क्योंकि ये गोल्ड नहीं है मेरे लिए बहुत वो मायने रखता है. एनी विच वेज, बट आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई दिस टाइम. दिस ऑल्सो कॉस्टेड मी $699, बट आई एम वेयरिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, going to office wearing these things. So I just wanted to check that how long it's gonna last. Like ये जो मैं पैसा पे कर रही हूँ, is it worth it or not? Moving to the next one is this basic top I have bought from H&M. This is nothing but why I got it. I always love V neckline वाला जो top आता है. If you have checked my previous Myntra वाला haul, so you would know that I love V neckline वाला tops. So this one also it costed me I think $699. It's a basic top. It has a थोड़ा deep plunge neckline है, so इसीलिए मुझे बहुत पसंद आया. There is nothing special or extra thing is there. No, only for the V neckline I got it, and I love this kind of basic top. I do not like too many things written on the front and all that, so that is the reason I got it. Then moving to the next thing is this cap. I got this cap because I always wanted a cap. I also have 2 to 3 caps, but जो उसका जो फिटिंग्स आता है ना, मुझे उतना खास नहीं लगता. लाइक अप्रोप्रिएट एक होता है ना कि एक सेटिस्फेक्शन, वो नहीं मिलता है. बट व्हेन आई गॉट दिस वन, देयर वाज अनदर कलर इन पिंक. आई थॉट आई विल गेट बोथ, बट देन लेटर आई थॉट लाइक पिंक वाला मैं ज्यादा पहनूंगी नहीं, क्योंकि पिंक वाला ऐसा कुछ कपड़े मेरे पास ज्यादा है भी नहीं. ब्लैक हर चीज के साथ जाएगा, सो इट्स सेफ टू गेट द ब्लैक वन. सो दैट इज द whole reason behind to get this cap. I love how it looks like on side look or front.
मेरे सर पे एकदम अच्छे से फिट होता है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक कैप जो परफेक्ट मुझे लगा। ओके, दिस कॉस्टेड मी 799 या। देन मूविंग टू नेक्स्ट वन इज दिस क्यूट लिटिल bag. So why I got this bag, there are a couple of reasons. First is I do not own any kind of colorful, this kind of vibrant color bag. This is a bag. So this is, I really love, I think green is the color of the season. I got so many things in green and I thought that the style, the look of this bag is very elegant. So you can take it as a sling bag also because it has a sling. And इसके अंदर भी ऐसा कुछ खास ज़्यादा कुछ कंपार्टमेंट नहीं दिया हुआ है, एक ही जस्ट ऐसे कंपार्टमेंट है. Second reason is whenever I'm wearing all black outfit, I do not have anything to add colors. Third reason, I thought that this bag has some kind of, classy look. Okay, so this has a sling also. You can definitely wear it if you want to wear it like as a sling bag. Second thing, if you don't want to wear as a sling bag, you can just remove this one and you can carry it as a handbag. And handbag, if you're carrying it as a handbag, it gives a luxe look because of this handle, because it has all these little diamonds sort of detailing. Here you can see, so that is the main reason I think to make this bag more elegant, more luxe, and it costed me 2299. The next purchase is this another basic white top. This is the white top. H&M का basic tops जो आता है ना, वो मुझे सबसे best लगता है. But yeah, so this has costed me 799. There was no डिस्काउंट ऑन इट. मैंने ना एक साइज बढ़ा ही लिया है इसका बिकॉज ऑफ द समर. समर में पहनने के लिए थोड़ा ढीला ढाला कपड़ा चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये लिया. ऑफिस में भी आप पहन सकते हो. सो दैट इज दैट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस हेयर बैंड. This is a hairband. This is all velvety sort of things. This has costed me 699. मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगेगा. So this is how it looks like. I really like the this design also, this braid sort of design. It feels like आपके hair से बनाया हुआ है braid, क्योंकि एक hair style sort of look दे देता है जो मुझे बहुत पसंद आया. तो yeah, that is the reason I got it. And yes, that's that. Next, moving to the last one is this green, sage green sort of, you can say, or sea green. It's not sage, or I mean it's a sort of sea green only. So this is the skirt. This is a mini skirt. I love the color of this skirt. Second thing, the design and the style. It has this classic slit. It makes the skirt so classy, sexy, and so stylish. And when I paired it with this white top and this green, this one, it was looking so pretty. And moreover, I got it on discount. This is the actual cost is 1499, you can say, but I got it in 699, I think 699 or 799. So I think that was a steal deal for me, so I had to get it. That is the last purchase from H&M. And that's all for today's video, guys. I hope you really liked and enjoyed this video. If you like the video, hit the like, share and subscribe button. That would mean a lot to me. And if you have any specific video request, do comment below. I would try my level best to incorporate that in my upcoming videos. And also I will leave couple of discount codes in my description box. Feel free to use them. I am super active on my Instagram. If you like my content, do give me a follow there as well. And I will see you in my next video. Till then, take care, stay safe, bye.